Dear Guruji, thank you for having me again on this platform. हमेशा बहुत अच्छा लगता है and today जन्माष्टमी है तो थोड़ा सा just to say that Krishna is the 8th avatar of Vishnu. It's a very auspicious day and he spoke a lot about karma, dharma and devotion जो गुरुजी ने भी बहुत सिखाया ये and वो कहते थे हर चीज के लिए एक कोई कारण होता है, एक रीजन होता है. सो जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा. एंड ये टीचिंग जो है हमारी बहुत प्रोफाउंड है, बहुत मीनिंगफुल है. एंड आई थिंक गुरुजी अगेन पैरेलल यही सिखाते थे कि चंगे कर्म करो, मारा ना किसी का करो और चंगा इंसान बनो. कहते से तुसी मैनू दे की सकते हो, मैं तुहानू इन्ना ब्लेसिंग देना, तुसी मैनू की दे सकते हो ਉਹਦੇ बदले, पर चंगा इंसान बनो and चंगा सोचो और चंगा करो and keep doing your duties and don't look forward to the results like they said कि हम एक कदम लेते हैं भगवान के तरफ तो he sees us to the finishing line. वो हमें आगे रास्ते में कभी छोड़ेंगे नहीं, हमेशा हाथ पकड़ के फिनिशिंग लाइन तक ही लेके जाएंगे. तो ह्यूमिलिटी भी कृष्णा ने बात की है, लॉर्ड कृष्णा ने, एंड ह्यूमिलिटी, मॉडेस्टी, सैक्रिफाइस. एंड कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई इट्स लाइक कोई पुराना नहीं, कोई नवा नहीं, लाइक गुरुजी यूज्ड टू से. सो कृष्णा ने भी अर्जुन के चैरियट को चलाया था. सो कोई जॉब बड़ी छोटी नहीं है, बस अपने अच्छे कर्म करते जाइए. एंड दिस इज व्हाट गुरुजी आल्सो टॉट कि चंगे कर्म करो, मारे कर्म मत करो क्योंकि उसका अंत अच्छा नहीं होता. अभी जब मिठास तो हर चीज नहीं होती है, कहते थे ना गुरुजी हर चीज में रस होता है, तो मारे कर्म करने भी रस होता है क्योंकि उस टाइम समझ नहीं आती है, लेकिन उसका जब फल भोगना पड़ता है तब समझ आती है. तो मैं गुरुजी के पास जब आई थी तो कर्म कह लो, मेरी हेल्थ कर्मा बहुत डीप था. आई हैड स्किन कैंसर, एस्थमा, होल इन द हार्ट, बहुत इश्यूज थी हेल्थ के साथ. And I was born with certain disabilities. And Guruji के पास आने के बाद everything just turned, the tide turned. And कहते थे ना कि गुरुजी किस्मत बदल सकते हैं, हत्ता दे लकीरा, मथे दे लकीरा हम नहीं बदल देते हैं. वो हमारी सोच, हमारा पर्सपेक्टिव, हमारे वैल्यू सिस्टम, he peels the layers. आहिस्ता आहिस्ता हमारे लेयर्स पील होते हैं जो हम लेयर्स लेके घूमते हैं, मटेरियल लेयर्स, डिजायर के लेयर्स, माया के लेयर्स. सो देयर सो मच, सो मेनी लेयर्स टू ह्यूमन बीइंग. एक लेयर से नहीं हम बनते. एंड गुरुजी स्लोली पील्स ऑफ दोस लेयर्स टू शो अस ऑफ ट्रूथ. अंत में वो कहते थे कि मैं तुम्हारे अंदर दी गुरु में जगाना आया. सो जब मैं आई थी तो मेरा अस्थमा 88 में मैं इंडिया आई थी. मैं आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन इंग्लैंड. जब 88 में इंडिया आई तो एवरी चेंजिंग सीजन मुझे आईसीयू में जाना पड़ता था एंड आई वुड बी ऑन स्टेरॉइड इंजेक्शंस. सो आप इमेजिन कर सकते हैं मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी ज्यादा खराब थी. तो जब गुरुजी के पास आई, मैं बहुत गुरुज एंड बाबा के पास भटक चुकी थी. तो गुरुजी ने सबसे पहले ये कहा, तो बड़े गुरु थे बाबा थे भटक चुकी हैं, हम सही जगह आई हैं एंड होम कल्याण होगा. एंड कल्याण का मतलब पता नहीं बहुत ब्रॉड है एंड बहुत प्रोफाउंड है. कल्याण गुरुजी सिर्फ उसी चीज का नहीं होता जो विजिबल होता है, जो चीजें हमें नहीं दिखती एंड उनका भी कल्याण हो रहा होता है. सो गुरुजी बहुत मेहरबान है एंड बहुत ज्यादा अपनी संगत को प्यार करते हैं और मेहर बरसाते हैं. बिकॉज आई जस्ट फील कि जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी गुरुजी कर देते हैं हमारी लाइफ में, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी फैमिलीज के साथ, सब कुछ ही बदल देते हैं फॉर द बेटर. एंड so with one langar my asthma triggered sitting in front of him because as I said every changing season मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था. तो गुरुजी के पास जब बैठी तो वो भी चेंजिंग सीजन था एंड मेरा एस्थमा ट्रिगर हुआ एंड मुझे बिल्कुल आई वाज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, मुझे सांस बिल्कुल नहीं आ रहा था एंड आई वाज टर्निंग ब्लैक एंड ब्लू. एंड गुरुजी को बोला मैंने, गुरुजी मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शन चाहिए, मुझे जाने दीजिए, आज्ञा दीजिए. कहने चुप करके लंगर कर अगर ठीक होना है.
तो आई सेड गुरुजी मैं कुछ भी नहीं, ना पानी पी सकती हूँ, ना कुछ खा सकती हूँ। तो ही सर अगर ठीक होना आज तो ए लंगर पूरा करना है, ए तेरे स्टेरॉइड इंजेक्शन है। मैंने लंगर की तरफ देखा, बड़ी कंफ्यूज। मैंने कहा ये स्टेरॉइड इंजेक्शन नहीं है गुरुजी। फिर मैंने बोला वर्बली, ऐसे गुरुजी आलू गोभी दाल है और ये चपाती मैं नहीं खा पाऊंगी। ये सब जब बाहर जूती उतार दी, अपने इफ्स एंड बट्स छड़ के आया कर, अपनी ईगो छड़ के आया कर, फिर खाली होके आया कर, और let him fill you with what you need. So I ate and रोते रोते खाया. Of course, literally I was crying. And as I bowed to him, I just said, मैंने यहाँ दोबारा कभी नहीं आना. And Guruji just looked at me and he said, कल आ जाए. And then I said, मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी और स्टेरॉइड इंजेक्शंस लूंगी और फिर घर जाऊंगी. So he said, I was saying this telepathically, verbally he responded, कल आ जाए, हम अस्पताल जान दी लोड़ नहीं, तेरा अस्थमा ठीक किता, कल्याण किता, जा ऐश कर ले, जा ऐश कर. So it was so profound his words, but of course I did not comprehend them. मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई थी क्या बोल रहे हैं गुरुजी. कल्याण किता, जा ऐश कर. ऐश मैंने सोचा क्या करूं, मुझे तो सांस नहीं आ रहा, जान निकल रही है यहाँ. बट विद दैट वन लंगर प्रसाद मेरा अस्थमा ठीक हो गया, जो मेरा कंजेनिटल था. I was born with it. So, and it crippled my life. I mean, I got cataract at the age of 31. बहुत side effects हुए, in fact, बहुत ज्यादा. And I think one of the side effects of excess consumption of steroids may be मेरा skin का बहुत rashes हो गए थे, which turned into skin cancer. The following year, Guruji calls me from the Sangat and he says, तू तेनू नींबू की तरह निचोड़े, क्या तेरा स्किन कैंसर ठीक किता, तू आईने को ना डरिया कर और बत्ती ना बंद किता कर बाथरूम जाने से पहले. तो मैं बहुत हैरान होकर गुरुजी को देखा. गुरुजी ने मुझे वापस देखा, तुम्हें हैरान क्यों हो रही है, सस्ते विच रब मिल गया ना, तो बैठ भी जाता है, गल्ला भी कर लेता है, खा भी लेंदा है, तो तुम्हें तो पता ही नहीं मैं कौन है. जब बड़े मंदिर लाइन लग जाने ना मेरे जान तो बाद, तो देखना फिर समझ आएगी कि रब आए थे, पर रब की कदर नहीं हुई, क्योंकि समझते मैं दुकान खोली हुई है और अपनी शॉपिंग लिस्ट लैंदे हो, दुनिया दी गल्ला मंगदे हो, नवा मकान दे दो या बड़ी गड्डी दे दो या मेरी शादी करा दो, बच्चा दे दो, तो जो हम सबकी एक ही डिजायर होती है. एंड देन ही जस्ट सेड कि तेरे को समझ नहीं आई तो कमली है. So, but what I understood is, and this is gospel truth. And I know Guruji used to say so many times कि जब introduce करा रहे होते थे किसी से, तो कहते ए कुड़ी मैंने बड़ा प्यार कर दिया. And so love is something that used to just ooze from my heart for him. It used to overflow. There was abundance of love. मेरी चाहे प्रॉब्लम थी पर्सनल लाइफ में भी, मेरी मैरिटल लाइफ भी बहुत डिटेरिएट हो रही थी by the day, by the minute, by the second, and I didn't know what to do. It was like I was in a box and there was no way I could leave. I didn't have that economic independence and I was very stressed, and Guruji knew this. And I had two growing daughters at that time. They were young at that point, and I was just stuck in a situation which was unpalatable, unsavory, and it was most disturbing, and it used to cause me a lot of anxiety. So anxiety बीमारियां बन गई, बहुत anxiety रहती थी, बहुत stress रहता था, और वो stress कई बीमारियां बन के मेरी लाइफ में आई. And Guruji used to say कि मैं बड़ा प्यार कर दिया. So जो भी हो रहा था मेरी लाइफ में, मुझे लगता था कि गुरुजी के पास जाना शाम को, वो मेरी I used to just find it so like मैं घर जा रही हूँ. गुरुजी के पास छोटे मंदिर जाना ऐसा लगता था घर जा रही हूँ मैं. एंड फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑफकोर्स गुरुजी ने बड़े मंदिर को भी प्रिपेयर किया, रेडी किया, एंड वहां जो बड़े फंक्शंस होते थे वहां हुआ. एंड ही वाज होम. मतलब अगर हम कहें वेयर इज आवर होम, होम इज वेयर द हार्ट इज, एंड वेयर वाज आवर हार्ट ओनली विद गुरुजी एंड एट हिज लोटस फीट. जब भी हम बैठते, कोई भी संगत उन दिनों की, आज की भी मतलब, पर उन दिनों में होता था कि वो फिजिकल में थे, तो हम बहुत एक्साइटेड होते थे आज संगत कि गुरुजी के पास बैठने को मिलेगा, लंगर खाएंगे. गुरुजी कभी कभी बातें भी कर लेते थे ऐसे, स्मॉल टॉक विद अस अबाउट आवर फैमिलीज, अबाउट आवर चिल्ड्रन, एनीथिंग. एंड समटाइम्स ही यूज्ड टू से कि बड़ा हमारा टाइम आ रहा है, नाम मांग लो, तो सिखाते तो रहते थे.
कि चंगे कर्म किता करो, मंत्र जाप किता करो रेगुलरली, लंगर भी खादा करो रेगुलरली, मतलब हफ्ते च एक बारी जरूर आया करो हाजरी लगाने से, मेरी नजरा तो खोल रहो। तो he really taught us how to live, how to love, how to laugh. He really taught us, you know, while he was sitting in the physical. And there was no, you know, sermons or any kind of, you know, preaching. It was all very practical. किसी का स्किन कैंसर ठीक कर रहे हैं तो किसी का अस्थमा ठीक कर रहे हैं, practically सिर्फ लंगर प्रसाद के साथ, and just by having, you know, imbibing and assimilating the शब्द. एक बार मुझे बहुत डांट पड़ गई, गुरुजी कहते तो ना शब्द नहीं सुन रही चंगी तरह, ऐसे गुरुजी मुझे समझ नहीं आती है, तो कभी कभी किससे क्या समझने वास्ते सिर्फ सुनिया कर, just listen, let the vibrations of those shabad heal you on the soul level, because the soul understands this language of divinity. So Guruji, as we know, he is the divine light. Of course, we didn't understand then, but I did understand that I'm sitting with someone very extraordinary, someone out of this world, literally. His glow was resplendent. It was like equivalent to 1,000 moons and 1,000 suns, if not more. He was beautiful in his appearance, his glow, his softness of the skin, his grace and his meher, and his just compassionate glance at you. Very, you know, ऐसे देखते थे, जब भी अपने संगत को देखते थे तो बहुत प्यार भरी आंखों से देखते थे, एंड ऑफ कोर्स कंपैशन के साथ देखते थे। सोच रहे होंगे कि कर्म लेके आई है मेरी, यू नो, मेरे बच्चे क्या कर्म कर रहे हैं। पैदा होना भी, एक इंसान की जोनी लेना भी, इट्स बिकॉज वी आर हियर इन द ह्यूमन फॉर्म टू यू नो एक्सपीट आवर कर्मास, टू हेल्प आवर द ह्यूमन फॉर्म to you know sort out a human or karmic journey basically of many lifetimes. पता नहीं क्या क्या कर्म हमने किए हैं कितने जन्मों के, तो इतना बहुत है कि ये अवेयरनेस आ जाए कि इस जन्म में तो एटलीस्ट हम सुधर जाएं, एंड सुधरने के लिए, सुधारने के लिए हमें गुरुजी मिले हैं who constantly reminds us through others also. Sometimes it's through family, sometimes it's through your children, that mom, you're not doing the right thing, or you're not going on the right path, you know, because everyone comes into our lives as a teacher. So we must be open to learning. We must not have this ego that my daughter, my son, or my mother, or my father cannot tell me what is right or wrong for me. We must be willing to listen. Even Sangat, when they reprimand us, कोई गलती हो जाती है, वो संगत कुछ बोल दे, you know, कि अनीता आंटी या कोई भी कि आपने ये ठीक नहीं किया, तो सोचो, reflect, introspect, and then change yourself for the better. क्योंकि हम इसलिए आए हैं दुनिया में अच्छा इंसान बनने के लिए और अपने कर्म सुधारने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए, बिकॉज ये टाइम ऐसा आ गया, बिकॉज डिविनिटी इज एवरीथिंग। जो इंसान भगवान से नहीं जुड़ा वो अंधेरे में है, तो हमने वो रोशनी लानी है इंसान की लाइफ में by connecting them to Guruji. It's a very big thing because people are in darkness. We have all we're immersed in darkness at this point in our humanity. In humanity's life, this phase that we're going through is not easy for anyone, you know, and I think all around us we can see, जैसे गुरुजी ने बोला था कि बड़ा मारा टाइम आ रहा है, तो I think we're in the thick of it. We, our souls, chose to be in this, in this experience. We all chose to be born during this experience, and we must be grateful that we have the strength and the courage and the conviction to go through this by being spiritual beings. We can only march ahead if we strengthen ourselves, and we can only strengthen ourselves through meditation. जैसे गुरुजी ने बोला था, ध्यान लगाओ. You know, he's taught me at least. My journey is all about, you know, दान, ध्यान and dharam. So अपना अच्छे कर्म करो, अपना धर्म निभाओ, and like you said, satsang, seva, simran, and then gupt paat, gupt daan, gupt seva. Gupt means literally, okay, don't share whatever charity you're doing. Keep it between you and your guru. So this is very important for our own growth. I just feel that when we share, we spill out our blessings. तो वो पूरी blessings हमें नहीं मिलती हैं.
So the teachings are very simple but not easy always to practice, but it's very important to anyway keep correcting ourselves, keep watching ourselves, and hum apna we just carry on the journey. So then गुरुजी जब जाने वाले थे, अपने फिजिकल बॉडी छोड़ रहे थे, तो कहते थे चोला जब छोड़ रहे थे, एक हफ्ता पहले मैं उनको मिली थी, थर्सडे का दिन था. I remember very vividly, and he said, तेरी सेवा है अनीता, तो सत्संग किया कर, और अपनी माँ की सेवा कर. जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते और उनको प्यार नहीं कर सकते, वो रब से वैसे ही दूर हो जाते हैं. Because the mother and the father, Guruji really raised on a high pedestal, because he said, वो भगवान की तरह होते हैं, because they bring you to this earth, and then they give you the education and the whatever you want, whatever you need. So sorry, यहाँ भी लंगर आ गया मेरा. जय गुरु जी. ऐसा लग रहा है बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद आया. So I'm sitting in a satsang, by the way. So anyway, what was I saying? So sorry, I got distracted. So Guruji कहते कि sorry, I lost my train of thought. Guruji कहते, oh my God, I've gone blank. Guruji बिल्कुल भूल रही हूँ. What was I saying? Guruji, please remind me, someone who gone blank. लोही गांधी, आप आगे दूसरा सत्संग शेयर करेंगे तो आपको. I've gone blank. Oh yeah, sorry. So he saying, he distracted me. So वो कहते थे कि माँ बाप की सेवा करो, because जो माँ बाप की सेवा नहीं करता वो रब से दूर हो जाता है, because your mother and father are your first God. So as a daughter, obviously I moved away from my mother many years back, because she was in England, I was in India now, and मुझे मौका थोड़ी ना मिला था उनका ध्यान रखना, उनका प्यार करना. In fact, even love, I don't think I really loved my mother so much until Guruji blessed that relationship. And then I went back to England, like he said, वापस England जा, माँ दी सेवा कर, क्योंकि वो कली पै जाएगी. And he said कि तू सत्संग शुरू कर. And I thought, all these were foreign to my head. Why would I go back to England? I had, I was raising my daughters at that point. But Anishka was applying for US. Sonakshi was still in her final year. And nothing made sense to me, because there was too many changes happening in my life. From, moving into a new home with my daughters, and then my daughters flying their nests. And then, of course, going back to England. And I didn't understand what Guruji meant. But he had paved the way. And he paved the way beautifully, like he does for each one of us. He has his plans. We may see the destiny in front of us, but he plans it and he paves the way for us. वो ही सब कुछ करते हैं. And I really am a true believer of that. कि गुरुजी की blessing के बिना पत्ता भी नहीं हो सकता. So when Nishka and Sonakshi left for their respective universities, I literally packed my bags and went back to Manchester when I got to know my dad passed away in 2009. Anishka left in 2009 for the uni. In 2010, after dropping Sonakshi, I just felt that mom's on her own, and that thought, obviously, Guruji only plants the seed. And I went back to Manchester to take care of my mom, and she was ecstatic, because she was literally living alone. And at that age, it was not easy for her. But she never said, as mothers are very, I think the word is mom and sacrifice go hand in hand. So she never said, come back to me. She didn't want me to leave my life in India. It was a good life. बड़े मंदिर जाते थे, हम सेवा करते थे वहाँ पे. And then I used to share my satsangs at the back. छोटे मंदिर जाते थे, तो बहुत मजा आने लग गया था, because हमारी संगत भी बहुत बढ़ रही थी. लेकिन I dropped everything in 2010 and I went back. और जब मैं वापस गई, तो बड़े डर के अपनी फ्रेंड्स को फोन करती थी कि हमने सत्संग शुरू करना है. And they used to think, what is satsang? And what is, your guru? Who is this guru? So, it was kind of very challenging initially. But Guruji ki meher hoti hai, you take one step forward towards the truth, and the truth just encompasses you completely. Intent अच्छी होनी चाहिए, अपना भाव अच्छा होना चाहिए. तो वो 5 मेरे childhood friends थे, हमने शुरू किया. And now we have over 300 Sangat in Manchester, Newcastle, you name it, London. Guruji's just light is permeating the entire universe, and may it. Because your time ऐसा, I pray that Guruji
connects each one of us. And सचमुच अपने आप ही हो रहा है सब कुछ ऑटो पायलट पे. कभी सोचा नहीं था निष्का योगा सिखाना शुरू कर देगी. And it's such a beautiful path she's chosen. So now she's chosen a good path. ये गुरुजी ने ही सब कुछ किया है. मेरी लाइफ में मैंने कुछ भी नहीं किया. I would say I have made no efforts. Things just happen. They unfold on their own because गुरुजी की मेहर बहुत ज्यादा है हम सब पे. And इसलिए बहुत जरूरी है कि बस शुक्राना करो, बहुत शुक्राना करो. For every moment you get in your subconscious head, just keep saying thank you Guruji. Thank you for everything. Thank you for this lovely morning. Thank you for the fact that Kunal on at the 11th hour. मैं एक सत्संग में अभी मैं अंदर एंटर किया आज शाम को एंड कुणाल का मैसेज आज शेयर करोगे. एंड हम हेजिटेट भी नहीं करते जब सेवा करनी होती है तो एक सेकंड के लिए सोचे कैसे होगा, मैं सत्संग में बैठी हुई हूँ लेकिन गुरुजी करवाते हैं. ये उनकी मेहर है. एवरीथिंग इज बस एक्नॉलेज करना है. बिकॉज we literally puppets on a string. I feel sometimes हमारे हाथ में नहीं है. कभी सोचा था कि पैंडेमिक होगा and I've had the most beautiful lockdown because I'm here in Dubai with my daughter since 1.5 years and I just feel my life is, I'm in heaven because I'm near my family, I'm with my family and may Guruji bless everybody to be able to see the light in the darkness, to be able to value and appreciate every morsel that he gives us. Because everything is a blessing. Even this pandemic is a blessing because it's here to awaken us to our truth. Because we were all sleepwalking through life. We were consumed by consumerism and materialism. And Guruji ने कहा था कि मैं तुम्हारे अंदर से गुरु मुझे जगाना आया. And that is what his whole objective was, to descend the earth to uplift mankind. And मेरे आपको पता ही है जिन्होंने सुना हुआ है. उसके बाद मुझे 3 times ट्यूमर हुआ, ब्रेस्ट कैंसर. वो भी ब्लेसिंग के साथ ही आया because each time I had a fall, I would rise stronger and more confident and I built my self-esteem and I built myself up because it was fabulous that I knowing कि मुझे अपने आप पे काम करना है. I have to let go of my whatever it is. सब में के अंदर है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. So ये जो 5 अवगुण है हमारे अंदर, मुझे पता है I have to let go of my resentment. The past is just a foreign country and we need to move forward. So your teachings, your philosophical source तभी आई जब मैं बीमार होती थी. And then one day after mom passed away, जब संगत वहाँ बहुत बढ़ गई तो मैंने देखा कि मेरा जो रोल था, जो गुरुजी बोलते थे तू जगह जगह जाएंगी, सत्संग करेंगी. So that was fabulous because I started meeting beautiful Sangat world over. I started traveling from continent to continent and I loved it. I loved my seva. I'm eternally grateful for it because I used to see new places, new landscapes, new sceneries and meet beautiful Sangat. In the end, Guruji, like he said, कि सत संग. So सत के पीछे भागो, संग को respect करो. So it's very important to understand this pivotal truth कि when we come for satsang, we must have 100% focus on the sat. Sat is truth and the truth can be derived from शब्द गुरबानी. तो जब हम शब्द गुरबानी पे बहुत ज्यादा फोकस करके सुनते हैं, कोई ना कोई आंसर हमें जरूर मिलता है about our life situation. तो गुरुजी used to say कि सत्संग सुनिया करो, शब्द गुरबानी सुनिया करो. लंगर उस भाव से खाओ कि ये खाना नहीं है मेरा कि शाम हो गई मैंने ये खाना खाना है, कि मेरी दवाई है. For what Guruji knows. Sometimes we don't even know what's growing inside us or what is around the corner. We don't know. We have a myopic vision. Whereas Guruji has an infinite vision. So he can see well beyond the walls of our lives. And in the end, Guruji is with us. We just have to believe it, feel it, and see it with our heart's eyes. With the eyes of the heart. So Guruji के गुणगान गाना बहुत मुश्किल है. Words fall short. How can we praise our Lord? How can we praise Guruji and really, adulate him or appreciate him? Because Guruji, है नहीं vocabulary, dictionary नहीं बनी अभी. I think coming to Guruji is experiential and we just feel his love and we soak in his love and we are eternally grateful. So thank you for enabling me to share. Just give me a sign if you want me to share more or if I can. Jai Guruji. जी आंटी, आप प्लीज और
शेयर कीजिए कुछ सत्संग। So satsang ये है latest last year I was in Bombay for a satsang. वो गुनीत मोंगा है, उन्होंने बुलाया था कि एक हफ्ता मेरे पास आके रहो, और क्योंकि बहुत संगत बढ़ गई है, there's a lot of संगत around where she lives in Bombay. And क्या हुआ कि मैं जब बॉम्बे में थी तो अनिष्का ने बोला, मेरी elder daughter ने, कि mama come for 10 days to Dubai. So I said yeah, direct flight है, Bombay to Dubai. So I came. And then, of course, as we all know and are aware, the overnight our world changed, the tide has turned, and our vocabulary changed. Lockdown, masks पहनना शुरू कर दिया. I mean, it was just very dramatic and drastic. The whole world changed, and we were in a lockdown. तो बहुत blissfully वो साल बीता, because सत्संग हो रहे थे, चाहे बंद था सब जगह, पर यहाँ फिर भी हो रहा था. मैं एक कपल के घर जा रही थी, सुनील शिखा के घर जा रही थी every Friday evening, and I was ecstatic कि सत्संग बंद होगी गुरुजी, पर हमारे सत्संग नहीं बंद हुए. And this संजय सोनिया है यहाँ पे, who I'm very close to, and they used to take me. So I was eternally grateful कि सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, सत्संग मेरे हो रहे हैं regularly, and that is food for the soul. It really is. मतलब सत्संग के बिना तो आप एलिवेट भी नहीं कर सकते, प्रोग्रेस नहीं कर सकते स्पिरिचुअल जर्नी पे. बिकॉज जब हम अच्छी संगत के साथ बैठते हैं तो वही हमारी रंगत है. सो संगत जैसी संगत वैसी रंगत. तो अच्छी संगत में बैठने से हम बहुत इवॉल्व करते हैं. वी लर्न सो मच फ्रॉम ईच अदर. एंड एनीवे, द लॉन्ग टू शॉर्ट, that 2020 for me was blissful. I was back with my daughters after many years, and there was so much learning also. It's not all bed of roses. It never is with family. There was a lot of learning about myself also, which I realized. And but overall, it was blissful. As a mother, I would just say it was blissful because I was with my daughters. And then came 21, and it came with many challenges. Just before Sonakshi's birthday, 29th birthday, she got COVID. So of course that was a very difficult time for me also. It was daunting that Sonakshi has COVID. She's a very dainty looking girl. And then a few days before Anushka's 30th birthday, they were in the desert, and her Sonakshi's quad bike tumbled, which caused immense, a big accident. Of course, it was a big mishap, and Sonakshi was injured badly, and her face, her eye bone, and her nose was fractured, and the surgeon here very clearly stated she may lose her vision if we don't do surgery with immediate effect. So that was the surgeon here. Now the father said, you bring her to India because I know the best surgeons here. So now there's a couple of satsangs here. So Sonakshi, Nishka and I, and along with 2 other people, we booked our flights, and we were at the airport, and I was wheeling Sonakshi, and I was very happy to go back to India. Of course, adverse circumstances, but हमने सोचा चलो हम इंडिया जा रहे हैं वापस, after so long, after a year of being here. And I got stopped at the boarding gate, and I saw Nishka Meldo, and she was getting into some kind of discussion with the guy, kind of negotiating, why can't my mom go? And I could hear a little bit. I was still behind Sonakshi's wheelchair, and I said, something seems amiss. What's going on? So suddenly I see, and she says, you can't go, and she nods, and I said, what nonsense, I've got the boarding pass in my hand. Of course I'm going. But the long to short is that I was on the wrong visa. I have lived in India for 30 years on a tourist visa as a tourist, and today I really realize Guruji is making me realize that I'm just a tourist in this world, because I really have no permanent residency anywhere. So I'm just literally walking through life. And he said, you can't go. So the long to short, I said to the girls, carry on, I'll go home. And I went home to an empty home, and I felt so sad. Then I just prayed to Guruji. I said, okay, you take care of my girls and let the surgery be successful. And I'm okay to be here. I'm at peace. And that evening again, I went to Sunil Shikha's satsang, and I literally surrendered to Guruji and said, it's fine, I'll stay here. But of course, Guruji has bigger, better plans. He's omniscient and omnipresent. उन्होंने मेरी prayer सुन ली, and the following morning एक संगत है तो दिल्ली की. He's a very respected sangat, and he just messages me and said,
कि ये वीडियो देखना शिव जी का। तो आई सेड हाँ मैं देख लूंगी बाद में, मूड नहीं है अभी। तो क्या हुआ मूड को? तो मैंने कहा नो कुछ नहीं, इसे बताओ ना। तो आई टोल्ड हिम एंड ही सेड ओ बताया क्यों नहीं, यू नो आई नो द एम्बेसडर इन दुबई, मैं एम्बेसडर को जानता हूँ, मेरे को ये दिल्ली वाला फेंक रहा है। मैंने कहा मैं भी जानती हूँ क्वीन को बकिंगम पैलेस में। तो ये बस हंस के बात खत्म हो गई। He said, look, do you need help or not? So the long to short, I said, yeah, I need help. He said, open this site. I said, I'm not good at opening sites. I'm not tech savvy, and I'm really not, I can't fill in applications online. He said, okay, where's Anishka? I said, Delhi. So Anishka and him, over the weekend, literally, the whole weekend they spent gathering the documents and bringing it all together, piecing it all together. And then he said, look, Anishka's done the needful. And so have I. So now on Monday you will get your visa. Tuesday you will come back to India. And Wednesday you owe me a chai prasad in Chota Mandir. And that is exactly how it happened. I mean, only Guruji can make the impossible possible. I got the medical visa, came back to India. And as I landed, both the girls were with their father going to Hyderabad. For a final verdict on whether Sonakshi needed the surgery or not. They were in a quandary. They said 5 surgeons have said no surgery, 5 said surgery. And meanwhile, Sonakshi used to get this kind of double vision. So she couldn't really see properly. It was very sad. It was very heartbreaking to see her in that state. And Anishka really took care of her sister, younger sister. And it was just heartbreaking, the whole thing. The whole situation was really sad. And I would just pray to Guruji, Guruji, iska vision theek kar do, ya iski surgery successful ho jaye. I didn't know what was, in store. So then, what happened? Anishka calls me from Hyderabad and she said, Mama, doctor said no surgery. And I was sitting in Chota Mandir at that point and I said, Guruji, whatever is, just make it the best and make it a win-win situation for everyone. But then I have literally, her obviously faith stepped up. वो अपने आप ही जा रही थी बड़े मंदिर लंगर करने, छोटे मंदिर जा रही थी समोसा प्रसाद खाने on Mondays. तो वो उसकी जर्नी खुद ही स्टार्ट हो गई गुरुजी के साथ. आई फील वो हमेशा कनेक्टेड थे, बच्चे बचपन से जा रहे थे गुरुजी के पास. लेकिन somewhere of course, there's highs and lows of life, proverbial highs and lows, there's, distractions and, the faith is not sturdy or strong, especially सोनाक्षी का मैंने देखा कभी जाती है सत्संग, कभी महीने के लिए नहीं जाती, पर उस टाइम बहुत स्टोन्स हो गई थी एंड रेगुलरली जा रही थी. एंड गुरुजी ने ये बोला था कि रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. ही नेवर सेड गो इन द फास्ट लेन और गो इन द स्लो लेन, ही जस्ट सेड टेक द मिडिल लेन. मिडिल लेन में चलते रहो. स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस इन लाइफ. ये नहीं होता रोज सत्संग जाओ, पर एक रूटीन रखो. आप माँ बाप को मिलने के लिए भी तो एक रूटीन रखते हो ना, सोचते हो ना कि मैं मम्मी को मिले कितनी देर होगी, मैं एक हफ्ते में एक बार तो जाऊं उनको मिलने, उनके साथ खाना खाऊंगी. तो हाजिरी तो लगानी पड़ती है ना. दूर से तुम्हें कहते हैं प्यार करती हूँ, आप जाओ, हाजिरी लगाओ, मत्था टेको और शो करो, एक्नॉलेज करो, रिस्पेक्ट करो अपने गुरु की कि थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग. सो आई ऑलवेज फील दैट वंस अ वीक इज अ मस्ट, एटलीस्ट वंस अ वीक. एंड मैंने सोनाक्षी का मिरेकल देखा, विजिबल था कि विद इन वीक्स उसकी विजन वापस आ गई. Both the daughters flew back to Dubai, and then I got COVID. This was now, I had gone with my friends, and हमेशा कहते इनर वॉइस सुननी चाहिए. इनर वॉइस थी कि मैं इंडिया आई थी तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि तू आई है बहुत देर बाद, 1 साल बाद, तो कश्मीर चलो. मैंने कहा कोविड का टाइम है, मेरा मन नहीं है, और होली का दिन था, यही साल की बात कर रही हूँ, March 29, and I resisted for a while. मेरा इनर वॉइस बोला मत जा. But anyway, I played along, I went and I got COVID there only. And I came back very sick. Now, मेरी underlying health issues काफी थी. I mean, today I feel touch wood, hale and hearty. But autoimmune disease भी हो गया था मुझे बीच में 2016 में. And, I've always had some issues, some weak spots in my body. So, Guruji, again, मैं जब आई कश्मीर से वापस, तो 2 दिन बहुत खराब था, बॉडी एक एंड फीवर, हाई फीवर. Third day I just cried out to Guruji and I said, Guruji, हमेशा लंगर प्रसाद से मैं ठीक हुई हूँ, no matter what my issue has been, but I've always been cured of लंगर प्रसाद. मुझे कहीं से भी भेजो प्लीज. And you won't believe it. I mean, किसी को पता भी नहीं था कि मुझे कोविड है.
and quite serious. 1 week before था जब वो सारा escalation हुई थी, escalation of cases in Delhi. And so I was blessed that because I got the oxygen cylinder on time, I got the nebulizer on time, जो चाहिए था मिल गया. The third day, गौरव भैया बड़े मंदिर से फोन किया कि आपको लंगर प्रसाद चाहिए. मैंने इनको कैसे पता मुझे लंगर प्रसाद चाहिए. And उस टाइम पे बड़ा मंदिर छोटा मंदिर सब बंद हो चुका था. फिर सुदान जी का फोन आया कि लंगर प्रसाद भेजा. मैं कहा वाह गुरुजी आप कितनी जल्दी सुनते हो. So वो लंगर प्रसाद खा के रोज मैं बहुत जल्दी ठीक हो गई थी. And then my daughter said come back to Dubai, which now again I'm back with his meher, his grace. And what do I say? I mean, he is our best friend. Just don't make Guruji into someone unapproachable, someone distant, someone who we cannot reach out to. Guruji is very much in the seat of our hearts. He's our best friend. He's our mother, father. He's everything. Really, truly. And हमें सिर्फ उनसे बातें करनी है, उनसे प्यार करना है. Be God loving, not God fearing. And like he said, you know, just keep doing your good karmas. मंत्र जाप कर दे जाओ, पाठ कर दे जाओ, चंगा बनो. और चंगा also spread your life, spread your goodness also. You know, just keep inspiring other people and keep reaching out to Sangat also. Just make sure everybody is okay. Because everyone's suffering, everyone's struggling in today's world. So be compassionate, be humble, and just keep loving everyone. When you love people, you are loving Guruji, because we are all his children, and his light is lit in each one of us. So जब हम इन संगत को देखते हैं, हम हमेशा गुरुजी का रूप उनमें देखें, because यही एक सच्चाई है. And बाकी रब है तो सब है. गुरुजी है हमारी लाइफ में, तो सचमुच we are in abundance. And he will never leave us in scarcity. बस उनके साथ चलते रहिए, and there will always be, the sun will always shine. Jai Guruji, thank you ji for letting me share.